students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In the last video, we have started the first chapter of Business Studies and we have done the definition of management, we have done features of management as well as functions of management. And in this video, we will be covering the objectives of management. अब objectives होते क्या हैं? Objectives are the goals which we want to achieve, which a business organization wants to achieve. जो चीज हमें अचीव करनी है वो हमारा गोल है और वही हमारा क्या है? That is only objective. Now if I ask you what may be the objective of a business, एक business का क्या objective होगा? I feel यहाँ पे सभी बोलेंगे कि एक business का objective होता है profit कमाना, but it is not true. I agree, profit कमाना बहुत जरूरी है, but सिर्फ profit कमाना is not the only goal of a business. There are various other objectives which a business organization wants to achieve. Profit तो है ही, but उसके साथ साथ और भी goals हैं. So we'll be learning about the three goals here. The first objective of management is organizational objective. Organizational objective is related to growth, prosperity of an organization. एक business की growth कब होती है? जब वो पैसे कमाता है, profit earn करता है. So this objective is related to money. Organizational objective is divided into three parts: survival, profit, and growth. Whenever you start a business, first you think of surviving in the market. आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमारा बिजनेस मार्केट में एटलीस्ट सरवाइव कर पाए. एक बिजनेस मार्केट में कब सरवाइव कर पाता है? जब वो जितनी उसने लागत लगाई है, लागत लगाना मतलब जितना उसने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उतना उसको वापस मिल जाता है तो मतलब क्या है? ये बिजनेस सरवाइव कर पाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज लगाए हैं एंड इफ आई एम एबल टू रिकवर दैट 5 लाख रुपीज, दैट मीन्स माई बिजनेस will be able to survive in the market. So first is that you have to think of surviving your business in the market. अब मेरा बिजनेस सरवाइव कर पा रहा है, उसके बाद मैं क्या सोचूंगी? ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेरा बिजनेस अब अर्न करने लगे प्रॉफिट. अब मेरा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है. देन व्हाट आई विल बी थिंकिंग ऑफ? आई विल बी थिंकिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ माई बिजनेस. अब ग्रोथ कैसे होती है? इंक्रीजिंग by increasing the number of product line. अभी तक मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रखती थी. Now what I have done is I have increased the product line. Now I have started keeping 4 products, maybe 5 products. Or suppose I have a shop. Now for growth मैंने क्या सोचा कि ये यहाँ पे शॉप खोली हुई है, अब मैं क्या करूँगी? I will be opening the shop in different areas of the city. So profit कमाऊंगी, उसी के बाद तो मैं ग्रोथ सोचूंगी. So here, first you think of surviving in the market. At least जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना मिल रहा है, तभी तो मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो लॉस में जाएगा. लॉस में जाने से अच्छा है कि बिजनेस बंद कर दो. सर्वाइव कर पा रहा है तो क्या सोचोगे? Now you will be thinking of earning profit. After earning profit, handsome amount of profit कमा लिया है, now you will be thinking of growing your business. And this is related to organizational objective, जो कि basically money से related है. I hope this is clear. Now we come to the second objective of management, that is social objective. Society has actually given a lot of things to a businessman. Society has given land, labor, capital to the businessman to do the business. लैंड, लेबर, कैपिटल कहाँ से आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? सब सोसाइटी तो बिजनेसमैन को देता है. अगर सोसाइटी इतना सब कुछ कर रहा है बिजनेसमैन के लिए, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. सो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है. So whatever a businessman do towards
society. That all comes in the social objective. Now, what should a businessman do towards society? Society के लिए करना क्या चाहिए? First is that it should provide good quality of products. The quality of the product should not be inferior. Low quality का नहीं होना चाहिए. There should be no adulteration. What do you mean by adulteration? If I ask you, the adulteration is कि कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए. The product should be provided at reasonable cost. जितना उसका प्राइस बनता है उतना ही उसे प्राइस चार्ज करना चाहिए. Second is generating employment. You all know that India is facing huge unemployment problem. बहुत ज़्यादा unemployment problem India को है. So it's a responsibility of a businessman to create jobs for the people of India. और अगर वो ऐसा करती है, अगर एक बिजनेसमैन ऐसा करता है, तो क्या होगा? वो सोसाइटी के लिए अच्छा लगता है. Businessmen should also donate in charities, open NGOs, open schools, hospitals, parks. All these things will be beneficial for the society. So social objective is related to society. I repeat once again, organizational objective was related to money. Business कैसे बढ़ाना है, कैसे profit कमाना है, उससे related था. But social objective is related to society. I hope you must have understood. Now we come to the third objective of management, that is individual objective. This individual objective is also known as human objective. It's also known as human objective. You can call it as human objective or you can call it as individual objective. Now there is a responsibility of a businessman towards its employees also. अपने employees की तरफ भी responsibility बनती है businessman. So वो जो भी employees के लिए करता है, that all comes under individual objective. The third objective is individual objective. Individual objective is also known as human objective. This is also known as human objective. Individual objective is related to employees of the organization. Like the first one, that is organizational objective, it was related to money. Social objective was related to society, and individual objective is related to employees of the organization. A businessman has responsibility towards its employees also. Employees की तरफ भी businessman की एक responsibility है. Now, what are the responsibilities of a businessman towards employees? The first and foremost is to provide adequate amount of salary. जितना वो काम करता है, जितनी उसकी सैलरी बनती है, उसको सैलरी देना. Second of all, providing good working condition. What do you mean by good working condition? Good working condition is that proper fans होने चाहिए, proper lights होनी चाहिए, proper ventilation होना चाहिए, proper table chair जहाँ वो काम कर रहा है employee, वो proper जगह होनी चाहिए, neat and clean washrooms होने चाहिए, proper time fix होना चाहिए आने का जाने का. Then we say that businessman is providing good working condition. Along with this, providing them time to time training and development so that their knowledge gets updated. इससे क्या होगा? एम्प्लॉय को सीखने को मिलेगा एंड उसकी नॉलेज अपडेट होगी. सो जो भी बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय के लिए करता है, दैट कम्स अंडर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. सो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू ग्रोथ, मनी से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है. सोशल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू व्हाटएवर अ बिजनेसमैन does
society. Individual objective is related to employees. एक businessman employee के लिए क्या करता है? I hope students you must have understood. If you have any problem, you can message us by commenting it below. Thank you.